হোয়াটসঅ্যাপে লইলাম। যাই welcome to my YouTube channel. Understanding of functional value. Understanding of functional value. Functional value है क्या? थोड़ा सा उसके बारे में बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करें. Once we get the essence of functional value, अगर हम लोग समझ जाते हैं कि functional, suppose the fx है, a suppose alpha है, this is f alpha, this is our functional value. Maybe like this, say it is beta, this is f of beta, functional value. For example, एक numerical example दे देते हैं, जैसे y equal to x square. This is our x square. So it is 1. So this value is also 1. That means 1 is equal to 1. ये समझना है. Say this is say x cube. This is our x cube. 2 is there. F of 2 is equal to 2 cube equal to 8. This quantity is 8. This is all about functional theorem. Once we realize what is functional value, we can compare the value of sine 1, sine 2 and sine 3. 1, 2, 3 are in radian. 1, 2, 3 are in radian. तो इसको हम पहले समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करेंगे. तो ये हटा देते हैं. तो हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर, ये हम लोग का एफ एक्स. जैसे साइन 90 is in dB. So now 1, 2, 3 are in radian. So we have to know so many things. That is, say this is our sin x. This is our pi. Sin pi is 0. In between, there is a value which is pi by 2, approximately equal to 1.57. 1.57. Now, if अगर ये 1.57 है तो 1 कहाँ पे होगा? Obviously 1 यहाँ पे होगा. 2 कहाँ पे होगा? Obviously 2 यहाँ पे होगा. And 3 is where? 3 is here. क्योंकि this one is 3.14. I जो है ये 3.14. That is why 3 is here. So what is sin 3? Sin 3 is this much. This is our sin 3. This is our sin 3. This is our sin 2. This is our sin 1. So sin 3 के लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है. sin 3 is the least. ये तो समझ में आ गया. But what about sin 1 and sin 2? हम कैसे बोलेंगे कि sin 2 ज़्यादा है या sin 1 ज़्यादा है? उसके लिए हम लोगों को सिमेट्री समझना पड़ेगा. सिमेट्री मतलब sin pi by 2 is equal to 1. ये जो है ये 1 sin pi by 2. So अब 2 और 1 मिस्टेक, pi by 2 का नजदीक, नियर टू pi by 2. नियर टू pi by 2 कौन है? जो नियर टू pi by 2 है वही सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि फंक्शन ऐसा है, ये हाईएस्ट है, इसका नजदीक जो होगा वही हाईएस्ट होगा, जो दूर पे होगा वो कम होगा. ऑब्वियस ऐसा बात है. सो क्लियरली sin 2 is the most. So I want to compare, so that is why we write sin 2 greater than sin 1 greater than sin 3. Thank you.